Hello, good morning, good evening, namaskar, sat sri akal, adab, salam. How are you all doing? Hope you all are doing well. Myself, Saraswati Poswal. As you all know, I'm the poetess. I'm a multilingual poet. I write poetry. My favorite languages are English, Hindi, Punjabi, and sometimes in German. And I write on many of the literary websites on various various prompts and in various mode of writing like love, literature, nature, society. And I've written more than around 3,000 poems. And I'm penchant of writing since childhood and is writing for the various literary websites. And I've contributed many poems, around 200 poems in the anthologies in national and international. I received various national and international awards as well. And my first book was, as an author, was Missing Shah. That was released in Bhubaneswar by Anand Neel Niketan, the writer of Gajgamini, Bahubali. As you all must be knowing the movie name Bahubali, Anand Neel Niketan. Then my next book came. The name of that book was Moon Mesmerizing. That I got released in Hyderabad by Vishnu Pandya sir in Hyderabad event, and the journey went on like this. And then I got my anthology done with the collection of poem with the other poets around the world. Like 100 poets were there. In the name of the book was Pebbles, the Crystal Clear, as an editor. And after that, I've done Placid of Sanguine, and Placid of Sanguine, that was an editor again, the collection of poem with the other poets. Then after I did one more collection of poetry of other poets. The name was Placid. The name was Symphony of Peace. Recently, I've done with various poets around the world, India and national and international poets. So the journey goes like this, and I love doing the anthologies most of the time because I feel like giving recognition to the poets. I and I'm running a platform named Sargam for literary interaction with my entire admin team. They're supporting me, and in that I'm taking up the ventures like sketches. I try to portray the poets, the famous poets who are doing the literary job for the world. I'm the very small one. I'm not doing much things, and I'm just simply writing poems for my muse to satisfy myself and to share my words with the world, my experiences. So this is my way of thinking and writing the poetry. So people can gain something from my experience and my words for their life, and the life goes on like that. So I'll not take your so much of time. I'll start with one of my poem, the title of my poem. Firstly, I would like to start with the poem on love. It's an haiku poem. This was a awarded poem, haikus. Six haikus are there on love. The haiku one, haiku two, three, and four, and five, and six. The one, love is fathomless, scared feeling on the soothing flirting in mind. This was my first haiku. Love is fathomless, sacred feeling on with the soothing flirting in mind. Second, love obscure and fake, drift away to meet the shores, driving in action. Third, love is cluster star, luster in dwindlings of clouds, augmenting. Four, love is always buoyant, mesmerizing, scattering, sapling innocently. Number five, down of love is so mystical, magical, charm, unfurling heart joy. Six, love is mystic saint of effloves in the reverie, mellifluous, deep dreams. Written by me, Saraswati Poswal from Gurgaon. Now,
I'll recite one of my Hindi poem. The title of my Hindi poem is कहने को बड़ा महान है मेरा भारत. कहने को बड़ा महान है मेरा भारत. कहने को बड़ा महान है मेरा भारत. बेटी की रक्षा अब कहाँ कहाँ करे. बेटी की रक्षा अब कहाँ कहाँ करे. बैठे भेड़िए जहां जहां तहां उनका क्या करें. कहने को बड़ा महान है मेरा भारत. बेटी की रक्षा आप कहाँ कहाँ करें. बैठे भेड़िए जहां तहां उनका क्या करें. कहने को महान है मेरा भारत. क्यों नहीं सिखाया जाता. क्यों नहीं सिखाया जाता सम्मान बेटियों का और बहनों का करना यहाँ. क्यों नहीं सिखाया जाता सम्मान बहनों और बेटियों का करना यहाँ. कहने को बड़ा महान है मेरा भारत. कहने को तरक्की पर हैं हम. कहने को तरक्की पर हैं हम. पर तरक्की है कहाँ. पर तरक्की है कहाँ. आज भी पिस रही नारी. आज भी पिस रही नारी. बराबरी है कहाँ. आज भी पिस रही नारी. बराबरी है कहाँ. कहने को महान है मेरा भारत. क्यों नहीं. क्यों नहीं जानवरों को समझ आता ये. क्यों नहीं जानवरों को समझ आता ये कि वो भी इंसान है कोई सामान नहीं. क्यों नहीं जानवरों को समझ आता ये कि वो भी इंसान है कोई सामान नहीं. क्यों इन नादानों को कुचला जाता है. क्यों इन नादानों को कुचला जाता है. क्यों आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही नारी है. क्यों आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही नारी है. कहने को बड़ा महान है मेरा भारत. कहने को बड़ा महान है मेरा भारत. शर्मसार है पूरे जहान में. शर्मसार है पूरे जहान में मेरा भारत. कैसे कह दूं महान है मेरा भारत. कैसे कह दूं महान है मेरा भारत. जहां एक बेटी की इज्जत महफूज नहीं. जहां एक बेटी की इज्जत महफूज नहीं. निर्भय होकर बेटी घर से निकल सकती नहीं. निर्भय होकर बेटी घर से निकल सकती नहीं. कैसे कह दूं महान है मेरा भारत. This was my first second poem, and I'll recite one of my another English poem with you, The Man. It's a poem on man. On one side, I've criticized, and another one, I'm favoring the man because all men are not equal, or all five fingers are not equal. So, in that manner, we can't say, we can't criticize every time man for being wrong. Our teachings may be wrong, our upbringing may be wrong. Maybe they are not being taught properly. That's why they are misguided and doing the wrong things, and not understanding the concept of gender and what else. Anyhow, the educated and literary people, they understand that, they understand the difference, and they know the maturity, and that uh, they don't bias the genders. So this poem is for the man. In the quietness of solitude, the man. Title of my poem is The Man. In the quietness of solitude, he walks, a companion to his thoughts, from the classroom of learning to the open fields of teaching. In the quietness of solitude, he walks, a companion to his thoughts, from the classrooms of learning to the open fields of teaching, where wisdom is sown and the seeds of kindness take root. He labors his heart and soul invested in. He labors his heart and soul invested in. Each labor a testimony, each effort a step forth in the direction of the elusive place, the clasp of love, where his heart overflows like showers of spring rain on those he loves. With ethics as the guide to his, he reacts against the ragging storm of life, a sailor of trust, respect, his heart an unfathomable feeling and sustainable desires, mellowing with the wine, steadfast against the trail, his path entwined with the hope, though he wears the mask of mountain, sturdily unshakable, with yet within him a storm resides. Emotions swirl, wait until the gentle
curses of love's depth, and he becomes a river flowing and giving until heart comes knocking to him. Then he wears the armor of revenge, not to harm but to reclaim his lost pieces, a warrior with a heart that beats the justice, not chaos. He is the treasure chiseled by life, molded by experiences, easily agitated, yet unbreakable, a garment woven with the threads of faith, letting go of the burden while forgiving new paths, where hope dances and love finds its way home. This was the poem for man. Now I like to recite one Hindi poem. Hope you people are not getting bored with my poems. This is one Hindi poem recently returned on rain. Yeah, it's on rain. बादल, clouds we call them, और जलधर जैसे कहते हैं. तो it's an Hindi poem once again. जलधर तुम अपने घर जाओ, जलधर तुम अपने घर जाओ, बहुत घन घन वर्षा कर ली, बहुत घन घन वर्षा कर ली, बहुत तुमने मनमानी कर ली, बादल तुम अब अपने घर जाओ, ना व्यर्थ यूं ही जल बरसाओ, ना व्यर्थ यूं ही जल बरसाओ. धरा ने धानी चुनरिया ओढ़ ली, धरा ने धानी चुनरिया ओढ़ ली, नभ ने अपनी शून्यता छोड़ दी, नभ ने अपनी शून्यता भी छोड़ दी, खग भी हर्षित प्रफुल्लित, हरियाली से हो रहे आनंदित. धरा ने धानी चुनरिया ओढ़ ली, नभ ने अपनी शून्यता छोड़ दी, खग भी हर्षित प्रफुल्लित, हरियाली से हो रहे आनंदित. जलधर अब तुम अपने घर जाओ. आम जन जीवन सुगम हो गया, आम जन जीवन सुगम हो गया, हर एक व्यस्त जीवन में खो गया, हर एक व्यस्त जीवन में खो गया. मौसम अब खुशगवार हो गया, मौसम अब खुशगवार हो गया. इंसान मीठे सपनों में खो गया, इंसान मीठे सपनों में खो गया. जलधर अब तुम अपने घर जाओ, जलधर अब तुम अपने घर जाओ. रवि का ताप कम हो गया, रवि का ताप कम हो गया, उमस भरा दिन गुम हो गया, उमस भरा दिन गुम हो गया. कोयल का कंठ तर हो गया, कोयल का कंठ भी तर हो गया, पपीहे का विलाप बंद हो गया, पपीहे का विलाप भी बंद हो गया. जलधर अब तुम भी अपने घर जाओ, जलधर अब तुम भी अपने घर जाओ. पंख से सड़कें पुती हुई हैं, पंख से सड़कें पुती हुई हैं, आवाजाही अब बंद हुई है, आवाजाही अब बंद हुई है. मानव अब त्रस्त हो गया, मानव अब त्रस्त हो गया, हर मार्ग अवरुद्ध हो गया, हर मार्ग अवरुद्ध हो गया. जिधर देखो जल भरा है, जिधर देखो जल भरा है, गड्ढों में जल सड़ा हुआ है, मच्छर कीड़े पनपने लगे हैं, रोगों से घर अब भरने लगे हैं, रोगों से घर अब भरने लगे हैं. जलधर तुम अपने घर जाओ, जलधर अब तुम अपने घर जाओ. अब अगले बरस आना, अब अगले बरस आना, और खूब ढेरों जल बरसाना, अब अगले बरस आना और खूब ढेरों जल बरसाना. निराश तुम अब अपने निराद अब तुम अपने घर जाओ, निराद अब तुम अपने घर जाओ, न व्यर्थ ही जल बरसाओ, न व्यर्थ ही जल बरसाओ. जलधर तुम अब अपने घर जाओ, जलधर अब तुम अपने घर जाओ. This was my poem on clouds, rain. It has been so much of rain this year, and all around the world we have been facing this global warming effects, and due to that, we are going through this massive rains, and a lot of tragedies are happening, and so much flooding over the lands, and we humans are uh, facing so many problems in various areas. So that's why these thoughts came to my mind, and I wrote this poem on. Now I would like to recite one poem on daughters. Daughters are angels. Daughters are angels. They are our pride. Daughters are angels. They are our pride. Very few are lucky.
to have them in their life. Very few are lucky to have them in your life. Beautiful is their heart. Beautiful is their heart. They do all the best. They do all the best in the times of life. They are wet measure of their lives. They make the family happy and tie the snap threads with love. They make the family happy and tie the snap threads with love. They are chirping sparrows. They are chirping sparrows. Nothing is complete in world without them. Nothing is complete in this world without them. With their melodies smile, they harmonize. They are God's angel. They are God's angel to teach the wisdom of life. To teach the wisdom of life. They teach to be sentimental. They teach to be sentimental, way to stay with pride. They adore all family. They adore all family, no matter who is young. They enrich every heart with the jovial echoes in every corner of the house. They enrich every heart with the jovial echoes in every corner of the house. Daughters are angels, daughters are angels. Now, hope you like this poem. I would like to recite one more poem for you. This is a poem on harmony. Poem of harmony. The melody is poem of harmony. Melting in the air, essence flows with molten thoughts. Poem on harmony. The melody is poem of harmony, melting in the ears as essence flows with molten thoughts, each word reverberating, exploring and exceeding beyond prism of life, engulfing the tender voice of harmony, canopy of height of evanescence, mentoring all the shekels, bewildering with the hopes, with harmony, taking the deep depth of isolation through all the slumbers with revelations of sleeping, all the acoustic flow with the harmony, taking to the nature to nurture, as fellow of Japhras, with the diaphanous thoughts to reveal and meet the liberating soul with harmony. This was a poem on harmony. Uh, Now my another poem. This is if you don't mind, can I go with one of my Punjabi poem before this poem on symphony with peace? Okay, I'll go with this symphony of peace, then one with Punjabi poem. Symphony with peace. Symphony with peace is only parameters for life. Soak in humility and kindness. Throwing complaints is boring complaints all time. Let other express. We can sit calm, feel every allure, not only the one that touch your heart. Their expression is sacred, containing pleasure. Never yield, feel the tangible innocence. Never create the mysterious rapture, the supreme pleasure of humbleness with calmness. To reach the pinnacles where you can't latten all the desires. Symphony of peace. Let's hope for the best. Okay, now start with one more Hindi poem. The title is क्यों. क्यों मन बेचैन है कुछ पाने को. क्यों मन बेचैन है कुछ पाने को. क्यों तड़पता है अपनत्व को. क्यों तड़पता है अपनत्व को. क्यों रिश्तों से भरे बाजार में भाता नहीं कुछ भी मन को. क्यों रिश्तों से भरे बाजार में भाता नहीं कुछ भी मन को. क्यों सौदेबाजी व दिखावे से दूर ढूंढता है मन किसी को. क्यों सौदेबाजी व दिखावे से दूर ढूंढता है मन किसी को. क्यों प्यार का वो एहसास नहीं जीवन में जो आनंदित कर दे मन को. क्यों प्यार का वो एहसास नहीं जीवन में जो आनंदित कर दे मन को. क्यों भीड़ में भी अकेलापन अक्सर महसूस होता है. क्यों भीड़ में भी अकेलापन अक्सर महसूस होता है. क्यों और कब तक समझौतों के रिश्तों से समझाती फिरूं मन को. क्यों और कब तक
समझौतों के रिश्तों से समझाती फिरूं मन को। क्यों नहीं इस घुटन और तड़प का कोई इलाज पाता नहीं अब तक किसी को। क्यों नहीं इस घुटन और तड़प का कोई इलाज पता नहीं अब तक किसी को। क्यों और कब तक हम झेलें इस खोखले समाज और आडंबरों को। क्यों और कब तक हम झेलें इस खोखले समाज और आडंबरों को। क्यों नहीं सब कुछ साफ सा है जो दिखे सबको। क्यों नहीं कुछ साफ सा है जो दिखे सबको। क्यों नहीं सरल सा है जो सहज समझ सके सबको। क्यों नहीं कोई सरल और सहज सा है जो समझ सके सबको। क्यों नहीं कोई प्यारा सा। क्यों नहीं कोई प्यारा सा है जिस पर प्यार आए सबको। क्यों नहीं है कोई ऐसा जो समझे सबको। क्यों नहीं है कोई ऐसा जो समझे सबको। क्यों नहीं है कोई जो निस्वार्थ प्यार करे सबको। क्यों नहीं है कोई जो निस्वार्थ प्यार करे सबको। क्यों इस बड़ी सी दुनिया में हमारी छोटी सी दुनिया कभी नहीं मिलती। क्यों इस बड़ी सी दुनिया में हमारी छोटी सी दुनिया नहीं मिलती सबको हमको। क्यों मन बेचैन है कुछ पाने को। क्यों मन बेचैन है कुछ पाने को। So this was my Hindi poem. Now one more poem I would like to recite. It's a Punjabi poem and recently written by me. Yes. याद है मैनू ओ गुजरा जमाना। याद है मैनू ओ गुजरा जमाना। याद है मैनू ओ गुजरा जमाना ओ मेरी नानी दे हੱਥ ਦਾ ਸਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਬੜੀ ਬਣਾਣਾ। ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਬੜੀ ਬਣਾਣਾ ਸਾਡਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਚਾਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਲੇਬੀ ਰਬੜੀ ਖਿਲਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਲੇਬੀ ਰਬੜੀ ਖਿਲਾਣਾ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਬੱਡੀ ਛਿੰਝ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਤੇ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਣਾ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਛਿੰਝ ਦਿਖਾਣਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਤੇ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਣਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਸੋਣਾ। पंखे दे सामने कौन सोएगा। पंखे दे सामने कौन सोएगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸ ਆਸਮਾਨ ਤਲੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। पंखे ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਸੋਏਗਾ ਇਸ ਨੋਕ ਝੋਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤਲੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਕੁਐਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਮਟਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੁਐਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਦਾ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਦਾ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। So this was my Punjabi poem and few lines on and I'll recite with my German poem. This is a very short one. With that, I will give full stop to my poetry session. Hope you people are not got bored
with this poetry session of mine. Okay, and yeah, one small poem in Hindi, one more. That's beautiful. I'll go with that. Then after that, one, yeah. चाहते चाहते छुपी होती हैं अनगिनत चाहते दिल के बरामदों में कहीं ना कहीं चाहते छुपी होती हैं अनगिनत चाहते दिल के बरामदों में कहीं ना कहीं इंतजार होता है इंतजार होता है रुत बदले हम इशारा करे कोई ना कोई इंतजार होता है रुत बदले इशारा करे कोई ना कोई एक एक चाहत का हमारा भी हिसाब ले कोई एक एक चाहत का हमारी भी हिसाब ले कोई इजहार करे कभी ना कभी एक एक चाहत का हमारी भी हिसाब ले कोई इजहार करे कभी ना कभी खिल उठती है खिल उठती है फूलों की तरह कभी ना कभी खिल उठती है फूलों की तरह कभी ना कभी इकरार करे इकरार करे कोई तो कभी इकरार करे कोई तो कभी चमक जाती है अमित तारों की तरह आंखों में चमक जाती है अमित तारों की तरह आंखों में झांके पलकों में कोई तो कभी झांके पलकों में कोई तो कभी एक तो मिले हवा तो दूजी लाल होती है एक तो मिले हवा तो दूजी लाल होती है कोई तो करे रश्क चाहतों पे कोई कभी तो मेरी कोई तो करे रश्क चाहतों पे मेरी सुगंध की तरह फैल जाती है सुगंध की तरह फैल जाती है रोकने वाला तो हो कहीं ना कहीं रोकने वाला तो हो कहीं ना कहीं आफताब कर जाती है आफताब कर जाती है रूह को भी हिला जाती है आफताब कर जाती है रूह को भी हिला जाती है कोई तो पहरेदार बने कभी ना कभी रुला जाती है जगा जाती है एहसास कोई तो तलबगार बने कहीं ना कहीं कोई तो तलबगार बने कहीं ना कहीं so I'll give few lines on of German language. I'll recite one small poem. Was machen Sie, was magst du, was machen Sie, was magst du, wo wohnen Sie, wo kommst du, ich möchten was möchten was machen wie heißen ich heiße wie heißen was machen wo wohnen wo kommt ihr aus? Ich komme aus, ich komme aus, ich komme aus mit was machen wo wohnen wo wohnen So that's all. I'll give full stop to my session. Hope you people enjoyed my poetry, English, Hindi, and Punjabi, and tried few lines on German as well. So thank you so much, K. Kumar Prasanna ji, entire team of Fertile Brains for giving me this opportunity. I'm highly, truly obliged with this. Yeah, it helped me to uplift my spirit and hope my poems, they also get, other people also get inspired with my poems and they also get inspired and motivated. So my best wishes to entire team, everyone, this whole one. Thank you. Bye-bye. Take care.